चिंकी पापा को, मैं नहलाऊंगा इन्हें। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं इतनी भयानक ठंडी में नहीं नहाऊंगा। चलो जल्दी बाहर आओ पूल में से, नहीं तो इस पूल को ही पानी से भर दूंगा। नहीं नहीं, आता हूँ, पानी मत भरना। पकड़ चिंकिया पापा को। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं नहाऊंगा, बहुत ठंड लग रही है आज। अब लेकर चलो पापा को बाथरूम में। अरे माई रे, लगता है चिंटू के पापा को बाबू ठंडे पानी से नहला के ही मानेगा। अच्छा हुआ मैं बच गई इतनी भयानक ठंडी में नहाने से। चलो पापा, तुम इस पानी के टब में घुस कर नहाओ। क्या पानी के टब में? नहीं नहीं, मैं बाल्टी के पानी से नहाऊंगा। बाल्टी के पानी से मम्मी नहाएंगी, आप इस टब के पानी से नहाओ जल्दी। अरे तुम सब अपने पापा को ही ठंडे पानी से नहला रहे हो। अरे माई रे, उस टब का पानी तो बहुत ठंडा होता है। चिंटू के पापा तो बर्फ बन जाएंगे। घुसो पानी में। ठंडा 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 पानी, ठंडा है ये पानी, नहीं बर्फ है रे दादा। पापा तो मछली की तरह छटपटा रहे हैं। अरे कमीनों, निकालो 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 मुझे, ठंडी मेरे गुर्दों में घुस गई है। अरे नहाओ ना, इतना छटपटा क्यों रहे हो पापा? भाग रे दादा, बर्फ बन गया। पकड़ो पकड़ो, पापा को पकड़ो। लगता है मुझे भी भागना पड़ेगा, नहीं तो वो सब इधर ही आ रहे हैं। अरे चिंटू की मम्मी, बचाओ मुझे इन शैतान बच्चों से, ये मुझे ठंडे पानी से नहला रहे हैं जबरदस्ती। अरे वो सब तो इधर ही आ रहे हैं, भागो रे दादा। अरे क्यों भाग रही हो मेरी मेहरारू, मुझे बचाओ ना। मैं कैसे बचाऊं, मुझे खुद डर लग रहा है नहाने से। रुक जाओ पापा और मम्मी, तुम दोनों आकर नहा लो, बहुत पुअर हो गए हो तुम दोनों। अरे ये लड़के तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं, अब क्या करूं? चलती हूँ, उस पानी के टंकी पर चढ़ जाती हूँ। अरे चिंटू देख, मम्मी पानी के टंकी पर चढ़ गई। पापा तो है नीचे, पहले पापा को ही नहलाएंगे, मम्मी को छोड़ो, मैं भी पानी का टंकी पे चढ़ूंगा। तुम पानी की टंकी पर चढ़ के हमसे नहीं बच पाओगे पापा। अरे अरे, चिंटू के पापा भी आने लगे पानी की टंकी पे, लेकिन मैं उन्हें आने नहीं दूंगी यहाँ। अब मैं भी बच जाऊंगा नहाने से। हुई, चलो उतरो, भागो यहाँ से। अरे आने दो ना ऊपर, नीचे वो शैतान बच्चे मुझे नहलाने के लिए खड़े हैं। नहीं नहीं, तुम नीचे जाओ, नहीं तो वो सब मुझे भी पकड़ लेंगे नहलाने के लिए। जल्दी उतरो आप दोनों पानी की टंकी पर से। चलो हटो चिंटू की मम्मी, मैं भी आ रहा हूँ। उतरो ना जल्दी मम्मी और पापा। हम नहीं उतरेंगे। तो रुको, मैं बुलडोजर से ही पानी की टंकी को गिरा देता हूँ। ये लो, अब तो हम दोनों गए काम से। बाबू गया बुलडोजर लाने इस पानी के टंकी को तोड़ने के लिए। ये मेरे शैतान बच्चे आज मुझे नहला के ही मानेंगे इतनी भयानक ठंडी में। चुप हो जाओ मेहरारू, तुम्हें रोते हुए देखकर मैं भी रो दूंगा। चिंटू देख, बाबू बुलडोजर लेकर आ गया। अब तोड़ दूंगा पानी की टंकी को, छोड़ूंगा नहीं। आ गया, देखो आ गया, वो आ गया। कौन आ गया पगली? बाबू आ गया बुलडोजर लेकर। हट जाओ तुम दोनों वहाँ से, चिंटू और चिंकी, मैं तोड़ दूंगा अब पानी की टंकी को। हट जा चिंटू। अरे ओ कमीना बाबू, पानी की टंकी को मत तोड़, नहीं तो हम दोनों भी टूट जाएंगे। मैं तो तोड़ूंगा, ये लो। नहीं नहीं, मत तोड़ पानी की टंकी को बाबू, हम दोनों गिर जाएंगे। हिलने लगा पानी का टंकी। चिंटू की मम्मी, कस के पकड़ लो पानी के टंकी को, ये अब गिरने वाला है। अरे बाबू छोड़ दे, मत तोड़ पानी के टंकी को, मम्मी और पापा गिर जाएंगे वहाँ से नीचे। तू चुप कर पागल चिंकी, मुझे तोड़ने दे इस पानी के टंकी को। आज मैं मम्मी और पापा को
तुमको ठंडे पानी से नहला कर ही मानूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बचाओ, पानी की टंकी टूट गया। After my graduation, I quietly moved my grandparents out of the house without telling anyone, and that decision became the turning point of my life. On the surface, everything looked normal. Family photos still hung on the walls. Smiles still appeared at dinner. But behind those smiles was a silence that felt heavy, the kind that presses on your chest when something is deeply wrong. My grandparents had raised me when my parents were busy surviving their own struggles. They were the reason I finished school, the reason I stood proudly with a degree in my hand. Yet in the same house they helped build, they had slowly become invisible. No one shouted at them openly. No one pushed them out the door. It was worse than that. They were ignored, controlled, and quietly used. I noticed it in small moments. My grandmother asking permission before using the kitchen. My grandfather lowering his voice whenever money was mentioned. At my graduation party, while everyone congratulated me, my grandfather sat in the corner, smiling like he did not want attention. That image stayed with me. The next morning, while the house slept, I packed their clothes, their photos, their memories. I had already rented a small apartment near the park my grandmother loved. I did not tell anyone because I knew they would stop me. When we closed the door behind us, my grandmother whispered that she felt like she could breathe again. That was when I knew I did the right thing. By evening, my phone was full of missed calls. No one asked if they were safe. No one asked if they were happy. They only asked why I moved them and who gave me the right. That silence on my end was not weakness. It was the first boundary I ever set. The days that followed revealed the truth faster than I expected. My aunt accused me of being ungrateful. My uncle lectured me about respect and tradition. They said I was breaking the family apart. What they never said was they missed my grandparents. What they missed was the money. Bills started piling up. Expenses they quietly covered using my grandparents' pension suddenly became visible. I learned this slowly, piece by piece. My grandfather showed me bank papers he never understood but was pressured to sign. He said he trusted them because family should protect family. Hearing that made my chest ache. I started paying attention. I saved messages. I recorded calls. I stayed polite, calm, respectful. That calm made them careless. They spoke freely, thinking I was still a child who could be scared into silence. A distant cousin met me one night and told me she had seen my uncle change documents years ago. She stayed silent because she thought no one would listen. That sentence hit me harder than any insult. Silence had protected them for years. I decided it would not anymore. The confrontation did not happen in anger. It happened quietly. My aunt called asking for financial help. I told her I knew everything. The pause on the line was long. The next day, I shared the proof in the family group chat. No accusations, just facts. The reaction was chaos. Calls, messages, excuses, apologies that came too late. My uncle came to my door asking to settle things privately. I told him there was nothing private about what they did to my grandparents. For the first time, I saw fear in his eyes. Not fear of me. Fear of the truth. Things changed after that. Accounts were fixed.
Control was returned. Some family members disappeared from our lives completely. Others stayed silent, pretending nothing happened. I did not chase their approval. My grandparents started sleeping peacefully. They laughed more. They walked freely. That was my reward. Months later, my aunt messaged asking for forgiveness. I did not reply. Forgiveness is not words. It is change. The lesson I learned is simple. Silence protects the wrong people. Speaking up feels dangerous, but staying quiet costs everything. I did not move my grandparents out to hurt anyone. I moved them out to save them. The rest was just the truth catching up.